Good morning. Jai Hind everyone. Today we are going to discuss about next topic, important characteristics of bryophytic plants. As we have discussed yesterday about some important features, distribution, habitat, and brief classification of bryophytic plants. Now in detail, important characters. Bryophytes are commonly known as amphibians of plant kingdom. Why they are called as amphibians? We have discussed yesterday because they require water for reproduction, which is the essential part of these plants. The term bryophyta was coined by Robert Braun in 1864. That's why Robert Braun, which have given the term bryophyta, included many group of plants together as discussed yesterday. The branch of botany that deals with the bryophytes called as bryology, and the scientists which deal with the bryophytic plants or study or explore the bryophytic plants called as bryologists. Hedwig is known as the father of bryology, and father of Indian bryology commonly we call SR Kashyap. Here you can see some important bryophytic plants. This is Rixia. You can see that the specific growth of Rixia in rosette-like structure. Rose, you know that. Rose having petals. Petals जो होते हैं रोज के कैसे होते हैं? एक चक्र में, व्हील एक तरह से वर्ल में लगे रहते हैं. तो उस तरह से एक के ऊपर एक वर्ल ऑफ पेटल्स जो है वो रोज बनाता है. उसी तरह से ये रोज लाइक फीचर में ग्रो करते हैं जिसको हम कहते हैं रोजेट. बिकॉज दिस इज नॉट रोज लाइक स्ट्रक्चर. ये थैलॉइड स्ट्रक्चर है जो कि एक सर्कल में एक स्पेसिफिक एरिया में कवर करता हुआ ग्रो करता है, इसीलिए हम इसको रोजेट कहते हैं. तो इसकी पहचान है ये रिक्शिया की. दूसरा है मार्केंशिया. मार्केंशिया को जनरली हम डायकोटोमी शो करता है, यानी थैलस जो है वो ब्रांच होता है तो हर बार दो ब्रांचेस निकलती हैं जिसको हम डायकोटोमी कहते हैं. सिमिलरली रिक्शिया में भी होता है, लेकिन इसकी पहचान होती है इसके ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ the plant or markensia. These are called as archegonium, और जिस पे ये लगे रहते हैं आर्कीगोनियम फोर कहलाता है. दिस इज एंथोसिरोस. मैंने बताया था एंथोसिरोस क्या है? हॉर्नवर्ट है. और ये क्या है? एक्शियन मार्केंशिया. दीज आर लिवरवर्ट्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज लिवर लाइक, फ्लैशी लिवर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इनको लिवरवर्ट्स कहते हैं. तो दीज आर मेंबर ऑफ हेपेटिकोप्सिडा, अंडर क्लास हेपेटिकोप्सिडा, एंड दिस इज अंडर क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसमें ये जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, इसीलिए हम इसको हॉर्नवर्ट कहते हैं. तो ये भी आपके कोर्स में है, मार्केंशिया भी आपके कोर्स में है और एंथोसिरोस भी आपके कोर्स में है. नेक्स्ट हायर ब्रायोफाइट्स जो कि ब्रायोप्सिडा क्लास के मेंबर्स हैं, जिसमें ये स्फेग्नम है. स्फेग्नम मॉस है, मॉसी अपीयरेंस और वेलवेटी अपीयरेंस होता है, और ये लीफी स्ट्रक्चर होता है. ये थैलॉइड स्ट्रक्चर्स है, रिक्शा, मार्केंशिया एंड एंथोसिरोस. दिस इज लीफी स्ट्रक्चर. तो ये भी आपके कोर्स में है स्फेग्नम. अनदर ब्रायोप्सिडा मेंबर्स और मॉसेस आर लेग्यूमिया एंड पॉलीट्राइकम. So these are advanced bryophytic plants. Now come to important characters. First of all, the bryophytes are a small group of primitive land dwellers, क्योंकि ये first land plants हैं which came on earth for the first time. They have a leafy or thalloid green plant body which is a small in structure. These are minute plants, small plants. They are green in color. Green color means they are having chloroplastic pigments and they are photosynthetic in nature, or they are autotrophic. They produce their own food. ये general feature show किया है कि ये carpet-like structure बनाते हैं, and these are having the sporophyte attached to the gametophyte. Second important character is in their vegetative structure, they have become completely adapted to land habit. तो इनमें क्या adaptations हुए land habit के लिए? क्योंकि ये aquatic algae से land habit की तरफ आए.
एक्वेटिक में म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, छूने पर वो स्लाइमी और चिपचिपी लगती हैं, लेकिन ये लैंड प्लांट्स हो गए तो दे डू नॉट हैव दैट स्लाइमी हैबिट और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस नॉट प्रेजेंट हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने एडेप्टेशन की एक्वेटिक से लैंड हैबिट के लिए। तो वो क्या एडेप्टेशन हुई एक्वेटिक से लैंड हैबिट के लिए, ये एडेप्टेशन हुई कि इनमें अब एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन्स बनने लगे, है ना। पानी में एब्जॉर्प्शन के लिए रूट लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, सरफेस से ही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। लेकिन अब जब लैंड पे प्लांट्स आ जाते हैं तो उनके लिए रूट होनी चाहिए ताकि वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन इनमें क्या एडेप्टेशन हुई कि इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बने, दैट वर नॉट ट्रू रूट, जैसे हमने डिस्कस किया, दीज आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। हाउएवर दे आर डिपेंडेंट अपॉन वाटर, क्योंकि हम इनको एम्फीबियंस कह रहे हैं, फिर भी लैंड हैबिट के लिए इन्होंने अडेप्टेशन की, लेकिन अभी भी ये वाटर पे डिपेंडेंट है। फॉर व्हाट? फॉर सेक्स और रिप्रोडक्शन। जो इनके स्पर्म्स होते हैं दे आर मोटाइल इन नेचर, है ना, चल टाइप के स्पर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्लैजिला और सीलिया पाए जाते हैं। तो इनके मूवमेंट के लिए हमें क्या जरूरत है, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए वाटर की जरूरत है। तो इसलिए इन्होंने अडेप्टेशन तो लैंड हैबिट के लिए किया, स्टिल दे रिक्वायर वाटर, इसीलिए इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। बिकॉज विदाउट वाटर reproduction or sexual reproduction do not take place. Next important character लेते हैं, the plant body lacks true roots, stem or leaves. The plant body lacks true roots, stems or leaves. It grows prostrate on the ground. है ना, इसमें ट्रू रूट्स नहीं होती, ट्रू स्टेम्स नहीं होते, ट्रू लीव्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि स्ट्रक्चर हायर प्लांट्स की जैसा नहीं होता और ये धरती पर समानांतर बढ़ते हैं और सबस्ट्रेटम पे अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। अगर हम इनका डेवलपमेंट और इवोल्यूशन देखें तो लोअर ब्रायोफिटिक प्लांट्स से हायर ब्रायोफिटिक प्लांट्स की तरफ चले तो इन हायर ब्रायोफाइट्स लाइक मॉसेस द प्लांट बॉडी इज इरेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि धरती से समानांतर बढ़ते हैं या हम इनको कहते हैं कि ये कार्पेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन अगर हम लोअर ग्रुप्स की बात करें कि जिनमें थैलॉइड फॉर्म्स होती हैं तो वो तो प्रोस्ट्रेट बढ़ती हैं धरती से समानांतर। लेकिन जब हम हायर ब्रायोफाइट्स की तरफ बढ़े तो ये इरेक्ट हो जाती है, यानी इनकी संरचना खड़ी होती है, यानी इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस। तो इरेक्ट प्लांट बॉडी यानी मॉसेस में पाई जाती है जो कि ब्रायोफिटा के मेंबर्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल एक्सिस। क्यों वो इरेक्ट हो जाती हैं? क्योंकि उनमें एक सेंट्रल एक्सिस पाई जाती है जो कि कंडक्टिंग स्ट्रैंड यानी जाइलम और फ्लोएम की तरह काम करती है, बट दैट इज नॉट ट्रू। जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट इन दैट, मींस वेस्कुलर सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड। अब ये सेंट्रल एक्सिस जो है इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी लीव्स प्रेजेंट होती हैं। एकदम ट्रू हायर प्लांट्स की तरह लीव्स नहीं होती जिनमें मेसोफिल सेल्स हो या पैलेसिड टिश्यू हो, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो। ये केवल पैरेन्काइमेटस सेल्स कंसिस्ट करती हैं। और इसके अलावा जो हायर ब्रायोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें और लोअर ग्रुप ऑफ ब्रायोफिटिक प्लांट्स में डिफरेंस होता है। जो लोअर ग्रुप ऑफ ब्रायोफिटिक प्लांट्स हैं हिपैटिकॉप्सिडा है, उनमें राइजोइड सिंपल टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और लोअर एपिडर्मिस के एक्सटेंशन से बनते हैं। और हायर ब्रायोफिटिक प्लांट्स लाइक मॉसेस में ये एक्सिस जो सेंट्रल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसके बेस से निकलते हैं और ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स कंटेन करते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ राइजोइड्स। Now come to the next important character, that is the plant body is gametophyte. We know that. So they are having two important phases, gametophytic phase and sporophytic phase. तो पूरी लाइफ साइकिल में दो important phase ये कंसिस्ट करता है और दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो लाइफ साइकिल में ये दो important phases हैं। अगर हम एक ही डायग्राम से हायर ब्रायोफिटिक प्लांट से समझे, दिस इज मॉस और यू मे कॉल इट एज पॉलीट्राइकम। इसमें देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर शो किया गया है। दिस पोर्शन विच इज द
green color or having the rhizoids, leaf-like structure, and the main axis surrounding which leaves are present. This portion is called as gametophyte up to the rhizoids. And the upper portion, which is the reproductive part, after fertilization from the zygote, development of embryo takes place. Embryo divide mitotically to form a new phase, which is called as sporophyte. This upper portion is sporophyte, which consists of three parts: fruit, seta, and capsule in higher bryophytic plants like mosses or the member of Bryopsida. Foot is embedded over here, यहाँ पे embedded होता है foot, और सीटा extend होकर के stalk-like structure बनाता है, और this portion is called as capsule. This is the reproductive part in which spores are developed. These spores are haploid. So this is haploid phase. We call it as N or X phase. This is diploid phase. And from haploid phase, diploid is formed, sporophyte, and then again in the capsule, haploid spores are developed, which develop a new gametophyte. तो एक पूरी life cycle में दो phases alternate करती हैं, gametophytic phase and sporophytic phase, which are morphologically different. इसको हम heteromorphic type of life cycle भी कहते हैं. Now it is very much clear over here. ये थोड़ा सा एक डिफरेंट प्लांट लेकर के समझाया गया है इसको. तो इसमें दो फेजेस हैं जो कि एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती हैं. गैमेटोफिटिक फेज, ऑल्टरनेट स्पोरोफिटिक फेज. द गैमेटोफिटिक फेज इज मोर कॉन्स्पिक्यूअस, यानी ये ज्यादा बड़ी, लंबी और क्लियर होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, इंडिपेंडेंट फेज होती है, ग्रीन होती है और फ्रीली ब्रांच फेज होती है, जबकि स्पोरोफिटिक फेज शॉर्ट फेज होती है और कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पर. Now you can see here, this is very much clear life cycle of the moss like Polytrichum, Sphagnum or Pogonatum. This is the gametophyte on which male and female reproductive organs are developed, called as antheridial head for male reproductive organ and archegonial head for female reproductive organ. On archegonial head, archegonia are developed. You can see here, these are archegonia, which are flask-shaped structure, and these are antheridial head bears antheridium. In antheridium, sperms or antherozoids are developed. In archegonia, egg is formed. Now, fertilization takes place between egg and sperms. You can see here, after fertilization of male and female gamete, zygote is formed. Now, zygote is diploid structure now. Yahan se, this is haploid phase till this place. Now, zygote is diploid structure. This zygote grows by mitotic division, initially formed embryo, then developed into the diploid sporophyte. This sporophyte is also diploid. Now, in the sporophyte capsule, as shown you in the last figure, inside the capsule, spores are developed. These spores, which came out from the capsule after dehiscence or opening of the operculum, these haploid spores form protonemal stage, and then development of rhizoids takes place and the complete gametophytic plant by gradual development. So this is the complete life cycle. Haploid phase called as gametophytic phase, diploid phase called as sporophytic phase, they alternate each other. That is why clear alternation of generation is present in all bryophytic plants. Next character है, they lack true vascular tissue. True vascular tissue means for the conduction of water, xylem is absent. For the translocation of food, phloem is absent. So only these plants bear a central conducting strand. ये देख रहे हैं आप लोग सेंटर में, ये एक जो टिश्यू दिख रहा है थोड़ा सा आउटर टिश्यू से डिफरेंट है, इसको हम सेंट्रल सिलेंडर कहते हैं. सेंट्रल सिलेंडर की सेल्स थोड़ी कॉम्पैक्ट होती हैं और स्पेसिफिकली दे सपोर्ट इन द कंडक्शन ऑफ वाटर. आउटर टिश्यू में
ये भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जो कि जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें एपिडर्मिस और कॉर्टिकल टिश्यू में डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होता। तो एक्सेस में इस तरह का टिश्यू पाया जाता है, जबकि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम पैरेन्काइमा सेल से मिलके बना होता है, बस केवल ये मॉडिफाई हो जाती हैं फंक्शन के लिए। फंक्शन का मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए मॉडिफिकेशन होता है इसमें, लेकिन ये पूरी बॉडी पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। तो प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स ओनली। They reproduce both by vegetative and sexual reproduction. This is about the reproduction of bryophytic plants. इसमें दोनों तरह का reproduction होता है, vegetative and sexual reproduction. e.xylem reproduction bryophytic plants में नहीं पाया जाता, जैसे कि आप लोगों ने एल्गी में पढ़ा था, जैसे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली डेथ और डिके ऑफ द थैलस से होता है। जो ओल्डर थैलस होता है वो ग्रेजुअली डिके होता जाता है, उसकी डेथ होती जाती है और न्यू थैलस का फॉर्मेशन एपिकल नॉट से होता चला जाता है। तो ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस डाई ऑफ कर जाता है और न्यू पार्ट जो है ग्रो करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एडवेंटिशियस ब्रांचेस से भी हो सकता है, जो कि या तो मिडरिज से राइज हो सकते हैं, राइजोइड्स के पोर्शन से राइज हो सकते हैं, एपिकल नॉचेस से राइज हो सकते हैं। इनके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जैसे कि ट्यूबल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। जेमा कब बन सकते हैं, जिनमें स्पेसिफिक बॉडीज होती हैं जिनको हम जेमी कहते हैं और जेम्यूल्स बोलते हैं, जो ग्रो करके कंप्लीट थैलस स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिफरेंट मेथड से हो सकता है। नाउ कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफिटिक प्लांट्स में, जैसा आप लोगों ने एल्गी में पढ़ा था, 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओओगैमस। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफिटिक प्लांट्स में ओओगैमस टाइप होता है। ओओगैमस का मतलब ovum is formed, ovum or egg is formed, which is different in structure than the sperm or antherozoid. Antherozoid is motile type, जबकि egg और ovum जो है वो नॉन मोटाइल टाइप होता है, इसीलिए हम इसको oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में पॉलीगोनल एरियाज डिवाइडेड हैं और छोटी छोटी सेल्स हैं। These cells are called as एंड्रोसाइट्स which form the antherozoids. One androcyte form 2 antherozoids because whole plant body is haploid और जो एंथेरोजॉइड्स फॉर्म हो रहे हैं वो भी हैप्लॉइड है, तो ये माइटोटिक डिवीजन से फॉर्म होते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स नोन एज एंथेरिडिया which are stalked structure. इसमें एक छोटा सा स्टॉक होता है, you can see here, this is the stalk, and upper portion is called as globuose structure or body of the antheridium. The sperms or antherozoids जो कि एंड्रोसाइट से बनते हैं, they are biflagellate structure. Both flagella are whiplash type. Whiplash का मतलब they are not having the हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अगर टेंसल टाइप होते हैं तो हेयर लाइक कहते हैं हम इसको, जिससे एल्गी में आपने पढ़ा था मेनी एल्गी कंसिस्ट ऑफ टेंसल टाइप और वेप्लेश टाइप। यहाँ पर वेप्लेश टाइप ऑफ फ्लैजेला होते हैं, ये आप देख सकते हैं। एंथ्रीडियम में एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होना, दे डिस्पर्स्ड बाय ओजिंग फ्रॉम द एंथ्रीडियम बाय प्रेशर एंड ईच एंथेरोजॉइड कंसिस्ट ऑफ 2 flagella, 1 and 2 flagella. This is the body of antherozoid. Now come to the female reproductive part. मैं यहाँ समझाती हूँ, आगे आप इसको मैं बताऊंगी। तो this is flask shaped structure. It is embedded inside the tissue of the gametophyte. It consists of 3 parts. First stalk, second body, and third is neck. So the stalk is multicellular but short. The second part, body, called as venter. Inside the venter, 2 types of cells are present. One is egg cell, or called as oosphere or ovum, and another is venter canal cell, which is very small or triangular shape. The neck consists of 2 types of cells. At the apex consists of 4 lid cells. यहाँ पर 4 lid cells होती हैं और इनको हम कवर सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये लिड सेल्स होती हैं which are 4 in number. Then the part of middle part of the neck consists of neck cells,
which is the outer covering of the neck, and neck canal cells which are present inside the neck. Their number according to the genus and species is definite. तो इनकी संख्या में डिफरेंस हो सकता है, जबकि लिड सेल्स 4 ही होती हैं. हर जीनस में 4 लिड सेल्स आर प्रेजेंट, बट जनरल स्ट्रक्चर इन ऑल ब्रायोफाइट्स consists of the same type of archegonium, but the number of neck cells and neck canal cells vary. Now, female sex organs called as archegonium. तो ये पहली बार आर्कीगोनियम का डेवलपमेंट ब्रायोफिटिक प्लांट्स में हुआ. तो ब्रायोफिटिक प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स एज वेल एज जिम्नोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ आर्कीगोनियम. इसीलिए इन तीनों ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम लोग आर्कीगोनियट कहते हैं. देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये अब डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें. ये स्पर्म्स की एंट्री होना, ये स्पर्म्स की एंट्री विद द हेल्प ऑफ वाटर होती है. तो वाटर की सपोर्ट से, जो कि रेनी सीजन के वजह से मिल जाता है रेन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या नियर वाटर बॉडीज, तो ये स्विम करके और पहुंच जाते हैं बिकॉज दे आर फ्लैजिलेट और मोटाइल अपॉन द आर्कीगोनियल नेक स्ट्रक्चर. नाउ लिड सेल्स, ये आप देख रहे हैं 1, 2, 3 and 4 lid cells are present. They get open and give the entry to the sperms or antherozoids. They reach to the egg and fertilization takes place. Only one antherozoid fuses with the egg nucleus to form the zygote. So the fertilized egg is retained within the venter of the archegonium. It neither becomes independent of parent gametophyte nor passes into the resting period. जो fertilized egg है ये इसी में रहता है. कहाँ रहता है? वेंटर ऑफ द आर्कीगोनियम, और यहीं पे डिवाइड करके नेक्स्ट फेज यानी स्पोरोफिटिक फेज का फॉर्मेशन करता है. जाइगोट इनिशियली डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द डिप्लॉइड एम्ब्रियो, एंड देन एम्ब्रियो अगेन डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द डिप्लॉइड sporophyte. So zygote undergoes repeated mitotic divisions to form undifferentiated multicellular structure called embryo. You can see here. तो ये यहीं पर डेवलपमेंट होता है inside the archegonium. The embryo, by further division and differentiation, produces a relatively small spore-producing structure called sporophyte. तो ये sporophyte का formation होता है. ये different structures, different plants में दिखाया है. This is in Riccia. This is sporophyte is formed, which is simple type, not divided into Fuchsita. Only capsular form is present. This is in Markensia, which is hanging type. Foot is present, this is foot, this is seta, and this portion is called as capsule. So it is divided into all 3 parts. This is anthoceros, in which foot is present, seta is altogether absent or very small, but elongated capsular form is present. हम लोग इसको डिटेल में लेंगे. तो इस तरह से वेरिएशन पाई जाती है स्पोरोफाइट में, जिसमें किसी में फुट सीटा एब्सेंट होता है, किसी में फुट सीटा कैप्सूल तीनों प्रेजेंट होता है, किसी में फुट और कैप्सूल प्रेजेंट है, सीटा एब्सेंट है. तो स्पोरोफाइट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम लीव्स एंड रूट्स. इसमें स्टेम लीव्स एंड रूट्स का कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, जिनमें सीटा एब्सेंट होता है. एग्जाम्पल दिया है कॉर्सिनिया, एंड रेयरली बोथ फुट एंड सीटा are absent as in case of Riccia. इसमें दोनों ही absent होते हैं, only capsule is present. Next important character है the sporogenous cells present in the capsule form haploid spores, which are wind disseminated. Wind की help से spread हो जाती हैं. These are non-motile and cutinized. इनकी जो outer covering है वो cutinized होती है, cutin की बनी होती है. Next important character है bryophytes have also being used for greenhouse crops, potted ornamental plants and seedlings, and in garden soil. So they have many economic importance. We'll deal in a separate chapter as economic importance of bryophytes. Next, bryophytes are low growing plants found in moist and shaded places. So I already discussed about the habitat of bryophytic plants. So this is all about कि कहीं भी पाए जा सकते हैं, soil cover बना सकते हैं, ट्रीज की ट्रंक्स पे पाए जा सकते हैं, लीव्स पे पाए जा सकते हैं एज एपिफिलस ब्रायोफिटिक प्लांट्स. तो मेनी हैबिटेट्स दे हैव, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग दे नीड और रिक्वायर
moist and shady places. They require good moisture content for their growth. So this is the topic prepared by one of our MSc students, Sweetie. If you have any query, you may write in the chat box. खुशबू is saying that कि आज ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगी. बेटे देखिए ऐसा है कि नंबर ऑफ टीचर्स इन बॉटनी आर लेस, तो आज मेरी क्लास एमएससी में असाइंड है और बाकी टीचर्स भी दूसरी जगह क्लासेस में हैं, प्रैक्टिकल्स में हैं, और आपके 2 दिन ऑफ होता है वीक में, दैट इज थर्सडे एंड सैटरडे. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप लोग 12:25 पे बॉटनी की क्लास के लिए कॉलेज आते हैं. तो ये बार बार आपको बताया गया है. फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग पास कर चुके हैं. Any other query? Okay, Jahan to one. Meet you in the next class.